Hello students, welcome back to the online learning center of Karma coaching classes. Students, हम डेवलपमेंट चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर. लेट्स कंटिन्यू इट एंड फिनिश इट ऑफ टुडे. ओके, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं बाकी है, सो लेट्स begin. So we have to start from this topic, which is income and other criteria. Let's zoom it a bit. Yeah. Okay, so let's begin. Please try to concentrate on the text whenever I am reading it. Alright, so income and other criteria. When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals like security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. So as we discussed in the last lecture, no doubt money is required, income is required, but it is not the only required thing. All right, apart from it, all the people have different developmental goals as well in their mind, like freedom, equality, security, etc. Okay, let's continue the reading part. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. And just like we had many aspirations at an individual level, there are other developmental goals, there are other aspirations when we talk about of a nation, of a country, okay, of an economy. Okay, so no, obviously average income is one of the major criteria of determining the well-being of the citizens of a country, but yes, there are other developmental goals also which needs to be considered when we are talking about a country or a region or an economy. Okay, so let's read further. You will come to understand definitely. Remember, in the last lecture I just told you about an human development index concept, an HDI. Okay, so in the higher standards you will learn more about HDI and other things, but here also they have tried to explain a part of it, and so let's read it. Okay, what could these attributes be? तो ये वो कौन सी चीजें हो सकती हैं जो इनकम के अलावा, एवरेज इनकम के अलावा डेवलपमेंटल गोल यानी एस्पिरेशंस के लिस्ट में आती हैं एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल. टेबल 1.3 जो है ये per capita income of select states. Okay, let's read first. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2016-17. Basically यहाँ पे जो term use हुआ है NDP, net domestic product, ये नेशनल इनकम को मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है. ओके, सिमिलरली अगर स्टेट वाइज इसको हमें कैलकुलेट करना हो, देन द टर्म इज नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, NSDP. ओके, ये दो चीजों पे कैलकुलेशंस होते हैं एट करंट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, CP एंड MP, बट ऑल दिस कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट इन द पोर्शन एज ऑफ नाउ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट this is one of the method of measuring national income or the state income. Okay, let's read further. Let us ignore what this complicated term exactly means. Okay, so I have come to this point directly कि इस part को ignore करो कि ये term का meaning क्या है. Okay, but yeah, for the sake of your knowledge, I just told you that this is one of the method of measuring income. Okay, roughly we can take it to be the per capita income of the state. Okay, the same thing they have said over here. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. Okay, अब यहाँ टेबल देखो, टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स. द स्टेट्स आर हरियाणा, केरला, बिहार, एंड पर कैपिटा इनकम फॉर 15-16. यहाँ पर पैराग्राफ में तो उन्होंने 16-17 दिया था. सो देर इज अ प्रिंटिंग और अ टाइपो एरर इन द बुक. ओके, ये दोनों डेटा अलग अलग ईयर के नहीं हो सकते, एक ही ईयर के हैं. ओके, सो हरियाणा का है 1,80,174, केरला का है 1,63,475 एंड बिहार का है 34,409. सो दिस इज पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट्स. मतलब क्या, इस स्टेट में पर पर्सन की इनकम ऑन एन एवरेज इतनी है 180-174.
Okay, now as I earlier said, I will repeat it once again. 180 174 does not necessarily हर person की income है, इससे कम भी बहुत लोगों की है, इससे ज्यादा भी बहुत लोगों की है. So this amount comes to be an average. Okay, fine. So table के data के हिसाब से हरियाणा is at the top and Bihar is at the lowest. Okay, let's read further in the text. This means that on an average, a person in Haryana earned rupees 1,80,174 in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earned only around rupees 34,409 in an year. Okay, per annum. ये per annum figures है. Obviously, इंडिया का कोई भी स्टेट इतना इकोनॉमिक वाइज स्ट्रांग नहीं है कि ये मंथली फिगर्स हो सके, सैडली, बट इट इज ट्रू फैक्ट, इट इज अ ट्रू फैक्ट. सो ये पर एनम के फिगर्स हैं. ओके, एनुअल फिगर्स हैं. लेट्स रीड फर्दर. सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ दीज थ्री. ओके, तो ये बात कर रहे हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम ही सिर्फ एक मेजर होता नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, देन हरियाणा वुड हैव बीन एट द टॉप ऑफ दीज थ्री एंड बिहार एट द लोएस्ट. ओके, लेट्स रीड फर्दर. नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दीज स्टेट्स. अब एक चीज हमने कंक्लूड कर ली कि अगर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हमें मेजर करना होता, सो हरियाणा रैंक नंबर 1, केरला नंबर 2 एंड बिहार एट नंबर 3. बट ये कैलकुलेशंस और ये कंक्लूजन्स हमारे दिमाग के चेंज हो सकते हैं अगर आप नेक्स्ट टेबल का डेटा देखो तो. ओके, लेट्स रीड इट. ऑलराइट, so table 1.4 shows some more data of these three states, Haryana, Kerala and Bihar. Okay, let's read what these details are given. Basically, there are three details mentioned over here. One is infant mortality rate. Okay, what is infant mortality rate? The number of deaths in the age below 1. ओके, मतलब क्या, बच्चा जब पैदा होता है उससे लेकर 1 साल के उम्र तक, यानी उसके फर्स्ट बर्थडे तक, जो भी बच्चों की सैडली डेथ हो जाती है, मतलब वो बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं उनके फैमिली वाले, उस नंबर को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ओके, इंडिया में ये बहुत ज्यादा है. इंडिया का एवरेज अराउंड 44 है पर 1000 बर्थ्स. ओके, मतलब क्या, हर 1000 बर्थ में से 44 इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है. ओके, इन्फेंट मतलब 0 to 1 के एज वाले बच्चे, मोर्टेलिटी मतलब डेथ. ओके, एंड रेट मतलब परसेंटेज. ओके, सो हरियाणा का क्या है, 30 बर्थ्स पर 1000 डेथ हो जाती है, केरला में 10 एंड बिहार में 35. ओके, अब लिटरेसी रेट की बात करें तो हरियाणा के लिटरेसी रेट है 82%. मतलब क्या, इन द ईयर 2011 out of 100 82 people were literate in हरियाणा. केरला में है 94 एंड बिहार में है 62. ओके, केरला में वैसे भी केरला इज वन ऑफ द लीड्स इन दिस सेक्टर लिटरेसी रेट. हमारे नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा केरला का लिटरेसी रेट है. ओके, and let's see the third part, the next column. This is net attendance ratio per 100% at the secondary stage where the students are of 14 or 15 years. Okay, so what they are saying here is, ये वो परसेंटेज है जो बच्चे 14 और 15 साल की उम्र में भी पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, तो सैडली इंडिया में जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे नेट अटेंडेंस रेशियो कम होता जाता है. ओके, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ रेशियोज हैं जहाँ पर कम है. ओके, सो लेट्स रीड एज ऑफ नाउ ऑफ दीज 3 स्टेट्स. हरियाणा में 61% है, Kerala में 83% and in Bihar it is only 43%. Okay, so by the time a student comes in the 9th or 10th standard, only 43% students continue their studies. Alright, due to various reasons, XYZ reasons, which we are not talking about over here. Okay, that is completely another discussion. So ये कुछ और डेटा दिया है. अब इस डेटा के हिसाब से आपको क्या एनालिसिस करना है.
देखो, what does that table showed? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 10 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala, as shown in the earlier table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to those parents. Next, note the year to which the data pertains. It is 2017. So we are not talking about old times. It is 70 years after our independence, when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. Okay, so basically they have just briefed you of this particular problem of infant mortality rate. They just gave a brief of it, and what they tried to say that just imagine, or I can say, you know how dear you are to your parents. Okay, how dear you are to your elderly people in the family. Okay, and how painful it would be to see the child die before he even does not live for 365 days, he or she. Okay, so how painful it is for the parents basically to see this situation. Okay, and further they have mentioned that we are, a developing country. We have skyscrapers in the metro cities. We are seeing overall development of our country. Okay, we are trying to get more and more infrastructural ideas from the developed countries. But here, like more than 70 years of independence, what we are looking at. Okay, the situation is that we are not even able to save our children. Okay, 44 out of 1000 is much, यार बहुत ज़्यादा है. 44 out of 1000 infant childs get died. Okay, anyway, let's read it further. The problem does not end with the infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school beyond class 8. As I said, 9-10 तक आते आते आधे बच्चे तो पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई किसी ना किसी XYZ रीजन से छूट जाती है. नहीं, they can't study further. Okay, this means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, बहुत important point है ये, you would not be able to read what you are reading now because you are in 10th standard. Okay, अगर ये हमारे साथ हुआ होता, आपके साथ हुआ होता, तो हम वो रीड ही नहीं कर रहे होते जो अभी हम रीड कर रहे हैं actually. Okay, so we are very much lucky to have these books, to have wonderful parents, to have wonderful teachers with you. Okay, and you are able to like read and study. Okay, so just this might suggest you, like at this point of time, I suggest you to give a thank you message to your parents. And really, like, we are blessed to have such parents who like give up everything for our studies. Okay, for expenditure on our studies and our well-being. All right, so basically what they have just mentioned over here is they are coming to the next point. Before coming to the next point, they just skipped the text over there and there itself. So basically they are trying to explain this thing, that besides money, there are other things as well which needs to be taken into account while considering development of a country. Okay, some of which are that a nation should have a high literacy rate. Okay, a country should have minimum infant mortality rate. Okay, and things like this. Okay, just a minute. Yeah, fine over here. So these are the other things which are also considered while
ranking a country as a developed country, a underdeveloped country, or a developing country. All right, so let's read further now. The next topic is public facilities. This is the second last topic of our chapter. Let's go through it. How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind these crucial एरियाज? तो ये बात कर रहे हैं कि केरला में लिटरेसी रेट ज्यादा है, केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, ओके, बट फिर भी एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम ऑफ अ पर्सन इज मोर इन हरियाणा एंड लेस इन केरला. सो ये हो क्यों सकता है, कैसे है ये बात? ओके, लेट्स रीड फर्दर. द मेन रीजन इज मनी इन योर पॉकेट cannot buy all the goods and services that you may need to live well. So, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. एक बात यहाँ पे आपने नोट की कि though the average income of a person in Haryana is more, but वो infant mortality rate को कम नहीं कर पा रहे हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज को बेटर नहीं कर पा रहे हैं. ओके, इन्फेंट्स आर डाइंग ओवर देयर मोर एज कंपेयर टू केरला, जहां पर एवरेज इनकम हरियाणा से कम है. ओके, सो ये फैक्ट ऑब्वियसली सिर्फ हरियाणा का नहीं है, टेक्स्ट बुक में आपको वो एग्जांपल दिया है, ये फैक्ट बाकी स्टेट्स का भी है. देयर आर अदर स्टेट्स एज वेल जहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, एंड पीपल आर अर्निंग मोर ओवर देयर जस्ट लाइक हरियाणा. Okay, so this thing proves that money is not required. Money in your pocket does not require. From money in your pocket you cannot buy all the things. Okay, नहीं तो वो तो अच्छी हेल्थ बाय कर लेते हैं ना. Okay, वो बच्चों को पढ़ा सकते थे और ज्यादा, right? But ऐसा नहीं है. Okay, let's read further. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines or food unless you can afford to shift to a community that already has all these things. So obviously money से आप pollution-free environment नहीं खरीद सकते, okay? Unless and otherwise आप ऐसे environment में ना चले जाओ, ऐसे locality में ना चले जाओ जहाँ पर ये already facilities है, okay? तो वो shift तो होना money से ही possible है, no doubt. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं कि मनी से आप infectious diseases से protection नहीं अचीव कर सकते हैं. Alright, and luckily coincidentally we are reading this chapter जब पूरे दुनिया में कोरोना जैसी चीज फैली हुई है. सो क्या कर लिया हर डेवलप्ड कंट्रीज ने या क्या कर लिया डेवलपिंग कंट्रीज ने? ओके, मनी अगर फैक्टर होता जिससे हम इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच जाते, ओके, तो किसी ना किसी कंट्री में ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, राइट? बट स्टिल पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, people are sadly dying due to this situation and families are facing the problems. All right, so ये बात यहाँ पर वेल प्रूवन हो रही है. आपके पास, आपके इस बैच के पास एग्जैक्ट प्रूफ है दैट मनी आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. माना इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिसके लिए मनी रिक्वायर्ड है, ओके, बट ये वो अलोन फैक्टर नहीं है जिससे आप इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच सको. ओके, ऑलराइट, लेट्स रीड फर्दर. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? तो basically यहाँ पे ये आपको आपके साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टिवनेस की, द सेंस ऑफ कलेक्टिविटी. इसमें क्या बोल रहे हैं कि जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग कि एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड रखना चीप होगा या हर सोसाइटी के हर बिल्डिंग के हर फ्लैट के लिए एक एक सिक्योरिटी मैन रखना चीप होगा? ऑब्वियसली यू नो द आंसर फॉर दिस, नो नीड फॉर मी टू से. ऑलराइट, सो लेट्स रीड फर्दर. व्हाट इफ नो वन अदर देन यू in your village or locality is interested in studying?
would you be able to study? For example, you live in a locality where only you, the single student, is interested to study. No other family and no other student is willing to study further. Okay. The question is, will you be able to study? Right. Let's read further. Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So this is not possible to study in your locality. Okay, उस setup में कोई school नहीं होगी, unless and otherwise your parents are, you know, can very much afford to send you at a distant place and send you there to study. Then only it would be possible, but again there it would be a costlier affair. उनके pocket से expenditure ज़्यादा होगा. Alright, so you are actually able to study because many other children also want to study just like you, and because many people believe that the government should open schools and other facilities so that all children have a chance to study. So why there are government schools in like, you know, in every locality? Like here locality obviously means a bigger region, a big region. Okay, so basically you are able to study, and because there are many other parents as well, there are students as well who have you know, a same thought that they want to study. Okay, they are willing to study further, and that is why you are able to study. Let's read further then. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government or society has not provided adequate facilities. Even then, जो हम बात कर रहे थे अटेंडेंस रेशियो की, जो हमने बोला था ना कि बिहार में या हरियाणा में 9th 10th यानी 15-16 की एज आते आते बहुत कम बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, राइट? तो जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो डिफरेंस नंबर है, उसमें भी मैक्सिमम गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं, बिकॉज देर आर मेनी फैसिलिटीज विच आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल प्रीमाइसेस. ओके, ऑलराइट, लेट्स रीड फर्दर. Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. Similarly, in some states, the PDS functions well. Public distribution system. आप लोगों ने एक हिंदी में टर्म सुना होगा, राशन की दुकान सुनी होगी, राइट? तो वो क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी लो कॉस्ट प्रोवाइड करती है फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स. Health and nutritional status of people of such states is certainly like to be better. तो जहां पर PDS सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, वहां पर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेट्स कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से बहुत बेटर होता है. ऑलराइट, लेट्स रीड फर्दर एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Okay, after this paragraph, we will read that. Now, isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? Table 1.6 shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. See, लुक एट दिस टेबल 1.6. यहाँ पर अब कंपैरेटिव स्टडी की है बिटवीन कंट्रीज. ओके, जिस तरह से हमने 3 स्टेट्स की हरियाणा, विच वाज दैट अदर वन, केरला एंड यस बिहार. ओके, उसी तरह से हमने अभी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बिटवीन 6 कंट्रीज. ओके, एंड क्या क्या चीजें इंक्लूड की इन्होंने, लेट्स सी. फर्स्ट इंक्लूड किया है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. ओके, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश. सो इन्होंने बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज ली हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज ली हैं, सो दैट एक अच्छी कंपैरेटिव स्टडी हो सके. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज गिवन. ओके, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? It is the normal age of a person who lives in a country. Okay, normally on an average एक person इतनी age जो mention की है उतनी age attain करता है. Again वो average है, उससे कम भी होता है sadly और उससे ज़्यादा भी होता है. Okay, and the next is mean years of schooling of people aged 25 and above. Mean means average. Okay, so average years of schooling क्या है वो mentioned है. एंड HDA रैंक इन दी वर्ल्ड, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दिस इज वन ऑफ द टिल टुडे इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर
to classify the countries as developed, developing and underdeveloped. Okay, इसी concept का मैं आपको पहले last lecture में नाम बताया था. Alright, so basically as you can see, इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम है 6,353 पर कैपिटा इनकम, सॉरी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68.8. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है ओनली 6.4 एंड HDI रैंक है इंडिया का 130. Okay, so let's first read the text and then come to this table if required. Now, Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world. पता है ना, श्रीलंका का साइज हम मैप में देखते हैं, इंडिया के नीचे एक ड्रॉप जैसी शेप में है. ओके, कितनी छोटी सी कंट्री है, फिर भी उसकी ग्रॉस नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा इनकम देखो ऑलमोस्ट डबल है. ओके, और बाकी सब चीजों में भी देखो वो ज्यादा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी हमसे बहुत ज्यादा है. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हमसे बहुत ज्यादा है. HDI रैंकिंग भी बहुत उनकी बेटर है, 76th रैंक पे, हम 130th रैंक पे. दिस इज इम्प्रूव्ड अ बिट, यू नो. ये 2018 की रिपोर्ट का डेटा है. उसके बाद इंडिया की एवरेज अच्छी आई है, बेटर आई है. Okay. Table also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better in the case of life expectancy. Nepal and Bangladesh, देखो ऊपर, या नेपाल एंड बांग्लादेश, सी इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी कम है, $2,471 एंड $677. और फिर भी इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो हमसे बहुत ज्यादा है, 70.6 एंड 72.8, जहां इंडिया की 68.8 ही है. ऑलराइट, सो वो मनी कम होते हुए भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी कर पा रहे हैं. Let's read further. Many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to the HDR by prefixing human development, but by prefixing human to development. It has made it very clear that what is important in development is what is happening to the citizens of a country, right? ये particular calculation का नाम development index नहीं है, human development index है. Okay, so ये name ही suggest करता है कि किसी कंट्री के वेलबींग होने का बहुत बड़ा रीजन होगा, उसके डेवलपमेंट होने का, डेवलप्ड होने का एक बहुत बड़ा रीजन होगा उसके सिटीजन्स क्या चीज फेस कर रहे हैं. ऑलराइट, इसलिए इस इंडेक्स का नाम, इसलिए इस कैलकुलेशन का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, दैट इज व्हाई दिस इज द नेम. ऑलराइट, इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग विच इज मोर and the most important. Okay, log important है, उनकी health important है, उनकी well-being important है. Do you think that there are other aspects that should be considered in measuring human development, and this is just left it to you कि कुछ सोच सकते हो कि कुछ और ऐसा मेजर होगा क्या, या हो सकता है क्या जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने में यूज होना चाहिए. बेसिकली वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए विच इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी. Okay, so let's read further. Sustainability of development. Okay, suppose for the present that a particular country is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generations. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. So, lower standards में हमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था environmental studies. Okay, उसमें हमने ये टॉपिक देखा था sustainability of development, and what we had learned over there was that you have to develop in such a way, you have to make your country grow and take it to the heights of development in such a way that, keeping in mind that there will be future n number of generations who are going to use the resources which you are going to use now. Okay, so basically
this concept is all about that you should use resources in such a way that those resources are saved, keeping in mind that there are future generations who will definitely come, okay, who will definitely get birth, who will definitely come, and they will also need the resources which the earth possess. Okay, this is the concept of sustainability of development. Okay, you should develop in such a way, you should develop sustainably. Okay, fine. Here they have mentioned a fact that many scientists and many educationists have warned that the present way of developing is very harmful for the future generations. Harmful in the sense that there is a higher chance that they won't find any resources on the earth to use. How they will sustain their life, how they will live a life on this earth. Okay, there is a quite a good thought written. You can see at the right hand side of your screen. We have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children. So basically what we in a usual sense what we come to know that we are getting the things from our forefathers. Okay, it is a true fact, no doubt, but the concept, this concept shows us that you have to use resources in a sustainable manner. Okay, there are future generations who will need these resources as well, so you are borrowing it from the future generations. Okay, you have borrowed it and now you have to use the resources cautiously. All right, so let's read further. Groundwater is an example of renewable resources. These resources are replenished by nature, as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, we would be overusing this resource. Okay, what is groundwater? We all obviously know. Okay, so basically what they are saying is groundwater renewable resources. No doubt, हर साल बारिश होगी and groundwater level increase hoga and we will be able to use that water for the coming months. Okay, till it does not get rain another year again. All right, but here we have to keep this thing in mind that that whatever amount of water which is being stored as groundwater, if we use more than that, we are what we are doing, we are replenishing this particular resource. Okay, so basically what we need to keep in mind that we use even this groundwater, which is a renewable resource which gets renewed every year due to the wonderful season which is of rain. Okay, rainy season. Still we need to use it cautiously, and we need to keep in mind that we have to take all the lives ahead of 1 year, then only we will get rain again. Okay, till that time this water should be used and it should be cautiously used. All right, and obviously non-renewable resources का तो बहुत ध्यान रखना ही होगा हमें, because they are, as the name suggests, non-renewable. Okay, it takes many years, by many we mean millions of years, to get these resources back, and even in million of years we get it in a small quantity. Okay, let's read. Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth of these resources and which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. Many people debate this fact that new resources मिल रहे हैं ना, नई नई जगहों पर भी डिस्कवर हो रहा है कि वहां पे ऑयल मिल रहा है, मतलब कच्चा तेल मिल रहा है, फलानी जगह पे कोल की एक माइन अभी डिस्कवर हो गई है. बट अगेन द फैक्ट रिमेन्स द सेम दैट दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, और इसी तरह से अगर यूज करते जाएं तो एक दिन ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे. ऑलराइट, लेट्स रीड इट फर्दर. Consequences of environmental degradation do not
respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जिस स्पेस पे हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही ध्यान रखना है, एक ही स्टेट को ध्यान रखना है या एक ही कंट्री को ध्यान रखना है. दिस इज cannot be done like this. Okay, but all the countries have to work together and they have to create such concepts whereby environmental degradation happens to a very low scale. We save our natural resources. Okay, so this प्रॉब्लम इज नॉट अ नेशन स्पेसिफिक. ओके, इट डज नॉट सी बॉर्डर्स कि मैं सिर्फ इसी कंट्री को ये प्रॉब्लम होगी या ये कंट्री में नहीं होगी ये प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है. ओके, अर्थ बिहेव्स वेरी मच इक्वली फॉर all the regions, all the countries on the earth. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparative, a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. So ये questions arise होते रहते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तभी तो हम develop होंगे. But इस चीज का भी ध्यान रखना होगा that we need to use our resources very carefully so that even future generations may be able to use